So can you hear me? Yes, sir. For the last few days, we have discussed a lot of different type of SEOs, like local SEO, SEO audit, like this. So do you have any question regarding this, any doubt regarding this? एक्चुअली सर क्या है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया कुछ ऑफिस व्यस्तता की वजह से, तो अभी थोड़ा सा 10-15 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं वापस पूरा रिवीजन करके प्रैक्टिस करके फिर आपको बता पाऊंगा। आज हम लोग थोड़ा प्रतिष्ठा, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट? Sir, I am not able to recall one point that how backlink help us in Google ranking. In day before yesterday class you mentioned. How backlink can? Means help in SEO ranking. You told that primary purpose of backlink is ranking. So I'm giving one example. Try to relate with the. So say, so currently you are doing BCom, right? Or BA? BA. BA. Okay, fine. So what is your aim in your life? Like, what you want to be after completion of it? Sir, mainly I want to go in the field of judiciary. The field of? Judiciary. I want to first. In the field of judiciary. Say you became a lawyer. Fine. Now, lot of people come to the court for different kind of reasons. They have different problems, legal problems. Okay. So when you are the newcomer in the court, you will not get enough client, right? So say there is a there is a lawyer who have like 2-3 years of experience, who is 2-3 years senior than you, and he recommended you. Okay, so like he told that we have a very new person who joined our bar council. So her name is Pratishtha. You can connect with her and she will guide. So someone whose seniority level is only 2-3 years, he recommended you. Now say you have done some amazing work and the Chief Justice of that particular court recommended you. Okay. So now tell me, which will create the maximum impact? The people who have only 2-3 years of experience in the field recommended you, or the Chief Justice recommended you? The Chief Justice. Right. So same for the website. So website में क्या होता है कि backlink का मतलब होता है recommendation. मैं जितना high domain authority से मेरा backlink लेके आऊंगा, that means that high domain authority website is recommending me. ठीक है. So SEO में ये इसीलिए हेल्प करता है क्योंकि गूगल का पर्पस है, गूगल जिस हिसाब से उनका एल्गोरिदम को डेवलप किया है या डिजाइन किया है, उसका मेन पर्पस है यूजर को सुपीरियर एक्सपीरियंस देना. सुपीरियर एक्सपीरियंस देने का मतलब क्या है? मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो झट से मुझे उसको मिल जाए. जिस वेबसाइट में मैं जाऊंगा उसमें सही तरह का रिप्लाई रहे, आंसर रहे, सही तरह का सोल्यूशन मुझे मिल जाए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. सो सुपीरियर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिलने के लिए कुछ चीज हम लोग को देना पड़ता है या करना पड़ता है, क्योंकि गूगल इज नथिंग बट अ एल्गोरिथम. इट इज बेसिकली अ मशीन लर्न. इसका अपना दिमाग नहीं है, ये खुद सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता. ये जो कर सकता है ये बेसिकली देयर आर सर्टेन लाइक प्रोग्राम्स कि इस ये टर्म रहने से तुम ये करो, ये टर्म रहने से तुम उसके साथ अलाइन करो, ये क्रॉल करो, क्रॉल करके इसको इंडेक्स करो. सो दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर देयर इन दिस एल्गोरिथम. ठीक है. सो ये सिर्फ ये जो इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल में है ये सिर्फ उसी को कर सकता है. ह्यूमन की तरह ये सोच नहीं सकता, ह्यूमन की तरह ये कर नहीं सकता. सो इसको कैसे समझ में आएगा कि ये वाला कंटेंट बहुत अच्छा है और ये वाला कंटेंट खराब है? सो देयर इज नो वे टू अंडरस्टैंड बाय अ मशीन. सो इसके लिए उनको कुछ
रैंकिंग सिग्नल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे मैंने लास्ट दिन बोला था, एक हो गया मेरा सेशन, नंबर ऑफ सेशंस, सेशन ड्यूरेशन, एवरेज पेजेस पर सेशन, बाउंस रेट, सो इसके ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर्स ये ट्रैक करता है कि लोग अगर एक जगह पे बहुत टाइम तक बिता रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ खास है, इसीलिए लोग टाइम दे रहा है। लोग इस वेबसाइट से निकल रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए निकल रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द रैंकिंग सिग्नल्स that the algorithm want to identify, and based on that it gives the rank. Now say some high domain authority, मतलब जिनका authority already proven है, कि सोचो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो वेबसाइट है इज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट, सब कुछ है। सो गूगल को इसको पता है कि ये अच्छा खासा है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर कोई छोटा मोटा वेबसाइट, सोचो मैंने एक वेबसाइट बना दी pinakidasgupta.com, ठीक है, सो इट इज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ वेबसाइट, गूगल हैव नो आइडिया और नो क्लू व्हाट एवर इट इज देयर इन माय वेबसाइट। सो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा वेबसाइट सही है? Now if Hindustan Unilever gave me a backlink, then we'll think कि अच्छा हिंदुस्तान यूनिलीवर इतना ऑथोरिटी साइट है, तो वो अगर इसको रिकमेंड कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ खास है। So this is how the backlink helps a website. ठीक है, जैसे मैंने बोला डायरेक्टरी सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन से क्या खास होता है? दो तरह का चीज होता है। एक तो डायरेक्टरी सबमिशन मेरा लोकल एसईओ में काम करता है, because it is all about local listing, local business and all, so I can target the local audience. दूसरा चीज है ये जो डायरेक्टरी साइट्स है, जैसे जस्ट डायल, जैसे गूगल माई बिजनेस, जैसे सुलेखा.com या yellowpages.com, ये जो साइट्स है, these are all very old and established sites। ठीक है, इसमें अगर मैं मेरा बिजनेस को लिस्टिंग करूंगा तो गूगल को लगेगा कि अच्छा ये वाला साइट में इसका लिस्टिंग हो गया तो ये चीज जेन्युइन है। सो वो क्या करेगा, वो इट विल गिव मी अ रैंक। सो इसीलिए बैकलिंक इंपॉर्टेंट है। और ऑफ पेज में हम लोग जो भी करते हैं वो बेसिकली बैकलिंक जनरेशन के लिए ही करते हैं, क्योंकि देखो एक वेबसाइट के लिए तीन चीज बहुत जरूरी होता है। एक हो गया मेरा कंटेंट, दूसरा चीज हो गया मेरा वेबसाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस, दैट इज द लोडिंग स्पीड, नेविगेशन एंड एवरीथिंग। थर्ड चीज हो गया बैकलिंक। ठीक है, पहला चीज कंटेंट मेरे हाथ पे है, मैं जैसे कंटेंट लिख के दूंगा गूगल उसी को देखेगा। दूसरा चीज हो गया मेरा वेबसाइट एक्सपीरियंस, दैट इज ऑल्सो इन माई हैंड, मैं डेवलपर को कैसे इंस्ट्रक्ट करूंगा, क्या करूंगा, वो डेवलपर मेरे ऊपर है। थर्ड चीज हो गया मेरा बैकलिंक। बैकलिंक डायरेक्टली मेरे हाथ पे नहीं है, मगर ये बेसिकली किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर है। तो किसी दूसरा वेबसाइट तभी मुझको बैकलिंक देगा अगर उसको लगेगा कि मेरे वेबसाइट में कुछ खास है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। So Neil Patel, he is one of the celebrity in digital marketing field. Okay, so people like us follow this person. So ये उनका blog है। So based marketing automation software. So this is one blog. Okay, so I am now clicking on it. So the blog was written by Neil Patel, and the blog is about based marketing automation software. So now I am reading the blog, and suddenly there is a link, HubSpot review. HubSpot. And constant contact.
ओके, सो मैंने ये लिंक को क्लिक किया और मैं HubSpot में आ गया। सो नील पैटेल इज, मैंने पहले ही बोल दिया, ही इज वन ऑफ द सेलिब्रिटी इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, सो ही हैव सर्टेन ऑथोरिटी इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। ओके, सो ये कुछ बोलेगा, इसका मतलब है इनका बात में दम है। सो नील पैटेल बोल रहा है कि HubSpot is a very good platform and he used a link here. So people जब इसमें क्लिक करता है तो HubSpot में चला जाता है। Okay, so it is a kind of backlinking. Okay, इससे HubSpot का क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि नील पैटेल, a person like him is actually recommending HubSpot. So जो मतलब मेरे जैसा जो डिजिटल मार्केटर्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग करता है या फॉलो करता है, सो वो अगर इस तरह का कुछ डिसीजन लेने जाएगा कि कौन सा ऑटोमेशन टूल मुझे यूज करना है, क्या नहीं करना है, सो दे एक्चुअली रीड आर्टिकल्स, दे स्टडी, डू रिसर्च, सो दे, if they find that Neil Patel actually referred or suggested HubSpot, so they will like they will consider this particular tool for their for their requirement. Okay, so ऐसे मेरा जो बैकलिंकिंग है ऐसे हेल्प करता है। so इसीलिए मैंने बोला था कि डोमेन ऑथोरिटी, मैं जब बैकलिंकिंग करूंगा मुझे डोमेन ऑथोरिटी देखना पड़ेगा। अगर मेरा डोमेन ऑथोरिटी 19 है या 20 है, मेरा बैकलिंक आना चाहिए अबव 20 से 25, 30, 40, 50 लाइक दिस। अगर मेरा बैकलिंक आ रहा है मेरे से नीचे वाला, मतलब 80, 70 लाइक दिस या 10, it will not make any sense. So basically वो बैकलिंकिंग का पर्पस यही है कि गूगल को अभी समझ में आ रहा है कि अच्छा ये HubSpot मेंशन किया, इसका मतलब HubSpot में भी दम, HubSpot is doing some kind of SEO, okay, and Google is also crawling, indexing that website. So ये HubSpot का वेबसाइट है, Google is actually crawling and indexing this website. ठीक है, गूगल को पता चल गया कि हाँ ये एक ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, HubSpot को छोड़ के भी बहुत सारा ऑटोमेशन टूल हो सकता है, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट्स हो सकता है, मेलचिम्प हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, सब ने कुछ ना कुछ एसईओ कर रहा है। मगर जब इसका मेंशन आ रहा है फ्रॉम नील पैटेल, गूगल विल टेक अ एक्स्ट्रा कॉशन। ओके, गूगल विल थिंक ओके दिस इज हाईली effective tool, or this highly important tool, so we should give him a rank. So that is how it works. That is why backlink is important. जितना तुम्हारे पास backlink रहेगा उतना तुम्हारा ranking में help होगा, and your domain authority also increases on backlink. जैसे हम बोलते कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैराडोना, he is a very good footballer, is a prince of football, we call him. So prince of football, who told him like he is a prince of football? The audience who actually saw him playing the football, they give him the title. Okay. So it is also like that. So the more people give him some kind of titles, the more people actually suggest you, the more your authority will rise. There are a lot of people who play good football, but probably they don't come into the limelight because the lack of opportunities, the lack of infrastructures and all. Okay, so there might be a lot of other Maradonas in this world, but probably due to some reason, probably he is fortunate enough so that he can play to the Argentina team. Okay, so the more people will recommend you, your authority will increase. So same, the more you get the backlink from different other websites, your domain authority will increase. Okay, now if your domain authority has increased several fold, now if you recommend someone, then also his domain authority will increase. So this is a chain. This is why backlink is important. So एक वेबसाइट में मतलब जो मैंने एसईओ ऑडिट का जो चेकलिस्ट दिया था, उसमें बहुत सारा पैरामीटर्स था।
अराउंड 28-30 पैरामीटर्स मैंने उसमें प्रोबेबली मेंशन किया था. सो कुछ चीज मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ. जैसे ये वाला जो HubSpot जो हो गया, ये मेरा बैकलिंक का एग्जांपल हो गया. सो Neil Patel is a referring domain for HubSpot, and this is the backlink for HubSpot. Okay. Now I am scrolling the website. I'm reading it. So, now another thing, as we all know about backlinks, now we will understand about inlinking and why it is important. So backlink basically मेरे हाथ में directly नहीं है, because I can't force some other third-party website to give a backlink. So there are certain methods like case blogging and other activities that I have mentioned. Even you can pay for it, but inlinking is in our hand because it is basically links within your own website. जैसे मैं ये blog पढ़ रहा हूँ, look for your marketing weakness. इसमें लिखा है this is often most challenging. What do your customer most dislike about your company or offering? What complaints are often mentioned in negative reviews? Now, negative reviews, it is a link. Let me click on it. So this is another blog. Your business needs more negative reviews. Here is why. So this is also another blog. So why this person used his own link within his own blog? What is the reason? The reason is simple. In the very first class of web, I have explained like web is all about capturing the mind. It's a net kind of thing. So you have to capture your user in such a way so that he can't go away from your site. So this is the reason. So I am searching something, I am looking for something, and I am reading a blog, and within that blog I have another link. So it is the reference of this particular topic. So again, I'm clicking on it, I am going to another page. So remember that formula. Whenever someone is entering your website, a session starts ticking, and it actually measures how much time you are spending in the website and how many pages you are seeing within that session. So this inlinking actually helps you to do this. If there is no link, ये अगर पूरा सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट रहता तो लोग क्या करते, इसको कंटेंट को पढ़ के निकल जाता. ओके, देयर इज नो वे टू गो टू अनदर प्लेस. मगर इसमें क्या हो रहा है, मैं एक टॉपिक डिस्क्राइब कर रहा हूँ और उस टॉपिक के अगेंस्ट एक रेफरेंस लिंक दे रहा हूँ, जिस रेफरेंस में उस टॉपिक के अगेंस्ट और कुछ चीज एक्स्ट्रा मटेरियल है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू अनदर पेज विद इन द वेबसाइट, दिस पेज. अभी इसमें और मैं चेक करूंगा, इसमें भी एक लिंक है, मैं इसको क्लिक करूंगा. सी, दिस इज अनदर पेज. अभी ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारा लिंक्स है. Let me check. Another link. So मैंने शुरू किया था यहाँ से,
एक क्या था, हाउ टू डू एन इफेक्टिव सॉट एनालिसिस फॉर योर मार्केटिंग कैंपेन्स। ये ब्लॉग से मैंने शुरू किया था स्टडी करना। इससे मैं गया कहाँ पे, योर बिजनेस नीड्स मोर नेगेटिव रिव्यूज, हियर इज व्हाई। इससे मैंने गया यहाँ से, हाउ टू एंश्योर योर ऑनलाइन रिव्यूज गेट योर बिजनेस। देन I end up here, 25 review sites to get more reviews for your business. Okay. So ये it is a reverse chronological order, मैंने जो पूरा चीज किया। So एक एक करके मैं टॉपिक देख रहा हूँ और मैं पूरा उसमें एंगेज हो रहा हूँ। So this is how to do SEO, ठीक है। ऐसे करके इनलिंकिंग काम करता है। So there are two things, backlink and inlink, दोनों का अलग अलग पर्पस है। बैकलिंक हम लोग को ऑथोरिटी देता है, हम लोगों को रिकमेंडेशन लेके देता है, ऑथोरिटी देता है, जो रैंक पे मुझे हेल्प करता है। और इन लिंकिंग यूजर को अपना वेबसाइट में एंगेज करवाता है, ठीक है। एंगेज करने से क्या होता है कि मैं यूजर ज्यादा टाइम वेबसाइट में बिताता है, ज्यादा पेज देखता है। ये भी एक रैंकिंग सिग्नल गूगल के पास जाता है कि यस, दिस वेबसाइट हैव लॉट ऑफ रेलेवेंट कंटेंट्स। सो दिस इज द difference between inlink and backlink and the purpose between inlink and backlink. अच्छा, अभी मैं दिखाता हूं साइट लिंक, साइट मैप, सॉरी। दिस इज साइट मैप। गूगल जब मेरे वेबसाइट में आके क्रॉल करता है, सो उनको एक मैप दिया जाता है। जैसे हम लोग किसी नया जगह पे जाते हैं तो जीपीएस ऑन करके जाते हैं। विदाउट अ मैप, विदाउट अ रेफरेंस, वी कांट गो टू एनी अननोन प्लेस। सो सेम फॉर गूगल। गूगल जब मेरे वेबसाइट पे क्रॉल करता है, एक वेबसाइट में बहुत सारा पेजेस है, बहुत सारा, ठीक है। देखिए कितना पेजेस है, और एक एक पेज का अपना हायरार्की है। जैसे कितना इमेजेस है, कब लास्ट मॉडिफाई हुआ है, कौन सा पेज के अंदर कौन सा पेज है, ये सारा चीज इसमें मेंशन है, ठीक है। सी दिस XML साइट मैप कंटेन्स 1001 URLs। मैं थोड़ा बैक करके जाता हूं, मैं कोई भी एक इसको लेता हूं। इसमें 1000 URLs है, तो इसमें 21 साइट मैप्स है। 21 साइट मैप के अंदर एक एक में 1500 ऐसे करके मेरा पेजेस है। सो गूगल को कैसे पता चलेगा कौन सा पेज का क्या प्रायोरिटी है, कौन सा पेज को कौन सा पेज के बाद कौन सा पेज आता है, किसके साथ किसका लिंकिंग है। सो इसको पता करने के लिए ये साइट मैप गूगल को देना पड़ता है, ठीक है। साइट मैप हेल्प्स गूगल टू क्रॉल द वेबसाइट इन अ फास्टर एंड बेटर मैनर। साइट मैप जनरेट करने का टूल्स है जो मैंने वो शीट में मेंशन किया। मगर अगर मेरा वेबसाइट वर्डप्रेस से बना हुआ है, then we can implement Yoast SEO, this plugin. Automatically this plugin generate sitemap, so you don't have to manually generate anything and to upload anything, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये कैटेगरी खुद ही इसको कैटेगरी में डिवाइड करके साइट मैप क्रिएट करके अपलोड कर देगा। सो वी डोंट हैव टू मैनुअली डू एनीथिंग। सो दिस इज द साइट मैप। साइट मैप ज्यादातर XML फाइल होता है, कभी कभार HTML भी होता है, इसीलिए साइट मैप डॉट XML या साइट मैप डॉट HTML हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज द साइट मैप। Now we will see one of the most advanced and important thing in SEO, that is robots.txt. Robots.txt
ये बहुत एडवांस मतलब एडवांस एसईओ का है। मेनली जो लोग नॉविस है, जब मतलब जस्ट स्टार्टेड डूइंग डिजिटल मार्केटिंग और जस्ट स्टार्टेड डूइंग एसईओ, उनको ये चीज का एक्सेस नहीं मिलता है। कंपनी में सबसे एक्सपीरियंस्ड एसईओ का जो बंदा होता है उसके पास इसका एक्सेस रहता है। कोई भी वेबसाइट का एक robot.txt बाय डिफॉल्ट रहता है। robots.txt क्या है? दिस इज द सोल ऑफ योर एंटायर वेबसाइट। इसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा पेज को क्रॉल करवाना है, कौन सा पेज को क्रॉल नहीं करवाना है। दिस इंस्ट्रक्शन इसी में रहता है। इवन यू कैन मेंशन कौन सा सर्च इंजन के लिए मेरा वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, कौन सा सर्च इंजन के लिए मेरा वेबसाइट को ब्लॉक करना है। कैन ऑल्सो मेंशन इट हियर। अब इसको देखिए, थोड़ा स्टडी करें। यूजर एजेंट स्टार, ये यूजर एजेंट क्या है? यूजर एजेंट का मतलब है बॉट, दैट इज द सर्च इंजन बॉट। इट कैन बी गूगल बॉट, इट कैन बी याहू बॉट, इट कैन बी बिंग बॉट, ठीक है। सो इसमें स्टार का मतलब है आई डोंट हैव एनी फैसिनेशन अबाउट एनी काइंड ऑफ बॉट, सो ऑल बॉट्स आर वेलकम टू क्रॉल माई पेज। ठीक है, स्टार का मतलब ये हो गया, आई एम नॉट डिफाइनिंग एनी स्पेसिफिक सर्च बॉट। नाउ सी डिसअलाउ। Disallow equals to comments, disallow WP content, disallow WP comments, disallow go, disallow WP admin, allow WP admin /admin ajax.php। इसका मतलब क्या है? disallow का मतलब है ये जो पेजेस है या ये जो पेज कैटेगरी है, इसको मैं क्रॉल नहीं करूंगा। आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शन टू माई सर्च इंजिन that don't crawl these website, these pages। बेसिकली ये क्या है? ये मेनली कमेंट सेक्शन है। वेबसाइट में जो कमेंट सेक्शन रहता है, मैं एक दिखाता हूँ इसमें। This is a comment section. So this particular statement blocking giving the instruction to the search engine that don't crawl these comments. So there is one reason to do so, because a lot of people use this comment section for their own issue. The last day I have mentioned कि कुछ बैकलिंकिंग का टेक्निक होता है जिसमें कमेंट में हम लोग कुछ लिख के उसमें अपना वेबसाइट की यूआरएल डाल देते हैं। सब देखिए इसमें भी है। So this person actually placed his website URL here, bsd dentalcam.com whatever। So ये इसका डाल दिया। So इसमें क्या हो सकता है? Google can treat it as a backlink। So इसमें ये जो वेबसाइट है इसका ऑथोरिटी बढ़ जाएगा। मगर नील पैटेल is a very like celebrity kind of people, and his like he have more than 1 lakh or 1.5 lakh traffic per month, more than. So in such from such a website you are getting a backlink free of cost. It is not the right thing. So that is why he blocked this section, so that nobody can utilize or exploit this website to generate their backlinks. So that is the reason he blocked this section through robot.txt. Now disallow WP content themes Neil Patel /js script comment.js। ये क्या हो गया? ये बेसिकली वर्डप्रेस का जो थीम है, जिस थीम के ऊपर ये पूरा चीज क्रिएटेड है, ये वेबसाइट क्रिएटेड है, वो थीम का फाइल है। सो थीम का फाइल, कोई भी वेबसाइट का एक थीम का फाइल क्रॉल करने से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। मेरा इट विल नॉट एड एनी वैल्यू टू माय यूजर।
क्योंकि मेरा वेबसाइट का थीम फाइल देख के लोगों का क्या मतलब so क्या इफेक्ट होगा, क्या सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ. इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. सो दैट इज व्हाई ही ब्लॉक्ड दिस सेक्शन आल्सो. दिस इज आल्सो wp comments post.php. post.php का मतलब है this one. So I am writing something with my name and email address, and the entire thing is getting stored in its database. So he is not like he is disallowing that database crawling through the bot. So जिस database में मेरा comment and मेरा identity का जो चीज रहता है, मेरा नाम ईमेल रहता है, वो वाला चीज वो डिसअलाउ कर रहा है यहाँ से. ठीक है, वो ये थोड़ा देखना है ये क्या चीज है. लेट मी चेक. सब 404 पेज है कुछ. और WP एडमिन हो गया कोई भी पेज का, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट का डिफॉल्ट एडमिन पैनल है WP एडमिन. ठीक है, let me check whether I can access this thing. So this is the back end of this website, the admin access of this website. So it is also not required to crawl by the Google or any kind of search engine bot. That is the reason it has disallowed. Now he already allowed WP admin /admin -ajax.php. It means where all his contents has been stored. So this is the section. So इसने अलाउ किया ये सेक्शन को ताकि इनका सारा जो कंटेंट है, जहाँ पे इनका रिलेवेंट कंटेंट रहता है, इनका प्रोडक्ट्स सर्विसेज रहता है, ये वाला चीज सिर्फ क्रॉल करने के लिए ये अलाउ कर दी. And also he has mentioned the sitemap here so that whenever Google is crawling, it can take the help of this sitemap for better crawlability. So this is what is robot.txt. इसमें अगर कोई भी मतलब इधर उधर हो जाएगा, अलाउ डिसअलाउ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेरा पूरा साइट डाउन हो सकता है, क्योंकि Google might not crawl my relevant page, rather it will crawl the very irrelevant pages. So इसीलिए ये वाला चीज सबसे एक्सपीरियंस बंदा को ही दिया जाता है. So how to generate a robots.txt? robots.txt कोई भी वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट रहता है, उसको सिर्फ डाउनलोड करके मुझे एडिट करना पड़ता है, या तो there are certain websites to generate robots.txt generator. इसमें आप जनरेट कर सकते हो. आप डिफॉल्ट क्या रहेगा, ऑल रोबोट्स अलाउड. You can also reduce. So all robots are allowed. Crawl delay. Crawl delay का मतलब है कितना समय बाद मेरा क्रॉल मतलब करेगा Google. Okay. So it can be 10 seconds, it can be 20 seconds, it can be 120 seconds, whatever your requirement is. अगर आपका सोचिए न्यूज मीडिया है जिसमें हर घंटे में या हर within 15 minutes, every 15 minutes you upload one news. In that case, you have to like select this scroll delay in like 20 seconds, 10 seconds of like 60 seconds like this. अगर आपका वेबसाइट ऐसा है जिसमें आप महीने में एक आर्टिकल डालते हो या कंटेंट अपलोड करते हो, in that case you can go for upper limit. You have to put your sitemap here, like
search robots. What are the search robots you will allow? Google is by default. Google Image allowed. Google Mobile allowed. And rest keep it default. You can also add restricted directories like /wp/admin. See, so user agent Google bot, mobile user agent start. Crawl delay 60. Disallow CGI.bin WP admin WP content. So other than these three directory, the entire website is allowed for crawl. So this is how to create a robot.txt. Once you create the robot.txt, you have to download this file. It will be a text file. This is a text file. You have to copy this file and you have to place it in under the cPanel of the website. So मैंने cPanel बोला था, तो cPanel में इसको upload करना है. Once you upload the cPanel, it will start reflecting in your website, and Google will start crawling according to the instruction given into the robot.txt. Pratisha, did you understand? Yes, sir. आपको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा. दूसरा चीज हो गया, उसका नाम होगा the next thing was structured snippet. ठीक है, structured snippet. So this is an example of structured snippet. Another thing is again this one. So these are called structured snippets. Even if I ask questions
this is. Okay, so these are all called structured snippets. Okay. We call this thing rank 0. This is called rank 0. Why? Because the actual rank starts from here. But before the actual rank starts, this thing comes to the first position. So this is called, that is why it is called the rank 0. This is a structured snippet. This thing is also called structured snippet or rich snippet. These are called structured snippet. It is also called Google cards. Now, how it comes to this place? How to do? How to leverage this kind of thing? How to leverage or how to get a rank in the rank 0? How to do this? There are certain techniques. First technique is about your content strategy. Okay. What kind of contents you are writing? If you study blogs, which has been published recently, you will see there is a trend. The trend is nowadays people write blog based on certain queries, question and answers like this, FAQ kind of things, or people use listicle kind of things. Listicle means top 10 ways to reduce your belly fat, top 10 reasons to do digital marketing, top 5 ways to get a good job. So this kind of thing, these are listicle thing, listicle type of contents. Okay, so listicle contents, question answers, or recipes, or even if you write something which is like which is not a kind of essay, rather it is a point-wise breakdown of content. These kind of content are eligible for getting a position in the snippet. It can be structured snippet, it can be Google cards, it can be rank 0, whatever. Okay. So you are only eligible if you write these kind of contents. Okay. Now, after writing these kind of contents, the next thing you have to do is Google data highlighting. Data highlighting. Okay. So there is a tool . So this is the highlighting. You have to highlight some specific thing in order to show Google, in order to set the priority. Like Google actually crawl your entire blog, but Google don't know which one point or what what is the thing you need to showcase to your user. Google don't know. Google actually not aware of that thing. So you have to highlight that thing so that Google can understand that this particular portion is the most important for the user. Okay, say my search is what is the lightweight Linux. See, if you need an operating system for an older machine, so this particular section, see, it is bold, it is in bold. Okay. Because Google now can identify, like as per my question, which portion of this blog can be relevant for relevant to solve my query. So what it did is it actually highlighted this particular area of the content. See? Now I am going back to this place.
See, this is a listicle content. Like 1, 2, 3, 4, listicle content. If I go to this place, see, this has been highlighted, and this is also a listicle content. And another thing you have to check, like most of the contents are point wise. Reasons to buy, reasons to avoid. Okay. See, like 1, absolute Linux, 2, anti-X, 3, Bunsen labs, like this. So if you write listicle contents instead of a full-fledged essay, you are eligible to showcase your blog in this place. And after creating this content, you have to highlight. Now I will show you how to highlight a content. There are certain categories under data highlighting. So these are the categories you can highlight: articles, book reviews, events, local business, films, products, restaurants, software applications, TV episodes. Okay. So based on your category, you can highlight anything. So this is a blog site, so I am selecting articles. Tag just this page. Okay. So now see, in this place, there are certain things like title, author, date published, image, category, average rating. So this is one thing. Now, see, whatever category I am taking, previously it was article. So here it was showing like the article title, author, date published, like this. I have now taken restaurant. Now the name, address, telephone number, reservation URL, like this. So these are some of the key elements of your of your website or of a particular content. So you can highlight this thing through this place. Like I am highlighting few things. It's a name. So the name here comes like this. Cuisine. The cuisine comes here. So like this, whatever I am trying to highlight, I can highlight it based on the parameters I have. Now I'm going back to the this. See this, these are recipes. And now check, there are certain highlightings.
This is the name of the recipe. This is the author. So this is the name. This is the author. This is the rating. This is the timing. And these are the ingredients. Name, author, date, ratings, pressure cooker, cottage cheese. Okay. Let me check. Pressure cooker, cottage cheese, clotted cream, green. Let me check where these things are. See. So whatever article this person wrote, but there is a small place where you can just added the snapshots of this thing, like total time 30 minutes. Here also total time comes 30 minutes. Then here he has added ingredients. Like the entire thing is here in as a summarized version. So these things are also coming. So everything you can see here is coming from the blog, because they have highlighted the main areas of this particular blog. Let me check this one. So Punjabi Matar Paneer, the image is also showing here. This is the image. Monica Govardhan. So this is the Monica Govardhan. There is no reviews and there are ingredients. Paneer, frozen green peas. So all these terms are here, like frozen green peas, and also paneers are mentioned already
mentioned here. Okay, so in this way they have highlighted these things, and currently it is coming in this place. This is how we create structured snippets, or we can say rich snippets. So these are actually rich results where we can like instead of entirely textual boring content, we can add images, we can add reviews, ratings, timings, everything for a better experience to the user, and user can also see and get an enhanced experience within the search engine. So that is the reason of structured snippet. It is also very much helpful for your SEO because it will give an extra advantage over your competitors, because most of your competitors are not aware about this feature. So if you use this feature, you might outperform them. Pratishtha, are you aware about keyword density? In one of the class you mentioned, I'm not able to recall. So in one of the class you mentioned. Okay, so can you tell me what is it? I'm not able to recall. I'm again mentioning, so this is one important point, keyword density, because when you write the content for any website or blog, you have to keep it in mind. Keyword density is how many keywords you have in your article or in your content. So that is the keyword density. Okay, so a recommended keyword density is 0.1%. Okay. Sorry, not 0.1%. So keyword density means, like, there is a thing called keyword stuffing. Say you are writing a blog on cooking. Okay, say a paneer recipe. You are writing a blog. So what should be a good keyword for this particular topic? It can be like best paneer recipe. So this can be a good keyword. Now you are writing a blog like this. Hello friends. Today I will show you some best paneer is of Punjab. The best paneer will be very
So see, this is a blog I'm writing. Now you see, like in every sentence, I have used best paneer recipe. Hello friends, today I will show you some best paneer recipes of Punjab. The best paneer recipes will be very useful for people who want to eat protein enriched food. The best paneer recipe will take not more than 30 minutes to cook. So everywhere this thing is there. I have mentioned my keyword. So you might feel like using your keyword will enhance your SEO, but it is wrong. If you overuse your keyword, we call it keyword stuffing. Okay. We call it keyword stuffing. Keyword stuffing is strictly prohibited by Google because keyword stuffing actually decrease the user experience in your website because it sounds very bad. Every time I'm repeating the same thing, it sounds very bad and it creates a very negative impact in the mind of the customer or the user. So that is why keyword stuffing is prohibited. So that is the reason there is a guideline of keyword density. Keyword density, it actually defines you like how many times you can use your keyword in a particular blog. Okay, it is 0.1%. So probably if you are writing around 200 or 250 words of content, you might use this thing only once or twice, not more than that. So keyword density is another important thing to remember in SEO. The limit is 0.1 to 0.2%. Not more than that. Okay. Okay, now another thing is tracking codes. So tracking codes are not directly related to SEO, but it is directly related to your overall website trackability. Okay, क्योंकि SEO में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, SEO के साथ साथ मैं सोशल मीडिया में भी काम कर रहा हूँ, मैं एड्स में भी, पेड एड्स में भी काम कर रहा हूँ. सो ये जो जितना काम कर रहा हूँ इसका ट्रैक होना चाहिए. Even in SEO, I am not spending money, but I am giving my time. I'm investing my time. I'm giving my effort. So that also have certain costs. So when you are investing something, it can be money, it can be time, it can be your effort. Then it is mandatory to measure whatever performance you are getting from that. So that is the reason you need to track all these things. So in my very first class, I have mentioned like one USP of digital marketing is measurability. So you can measure each and everything in digital marketing. Now, how to measure? There are certain things like analytics. So this is the dashboard of Google Analytics. Then Hotjar.
This is a hot jar. Then say Google Ads. Facebook Ads. So all these different activities, we have to measure them. We have to measure their performance. So to measure their performance, we need to add one code in our website. We call it tracking code or pixel. Tracking code or tracking pixel. Okay. In Facebook, we call it pixel. In Google, we call it code. But both the thing are same. So we have to implement these things in my website in order to track different activities. I'm showing you one pixel like that. This is how a tag looks like. A tracking code, you have the tracking pixel or tag, whatever you can say. It looks like this. It is basically a JavaScript code. Okay, and each code contains a unique ID. This unique ID, this one. This is unique for every account. Okay, if you create one Google Analytics tool, you will get another ID. So every account has its own unique ID. So this unique ID helps us to track the user behavior, the user interaction within my website. I can see in the real time, I can show you now. So this is currently 0. See, user in last 30 minutes, 8. So this is the real-time data. Okay. And you can also see several other parameters. So from which source you are getting the most traffic, okay? From which country you are getting the most traffic, what is the time, which page people are actually seeing the most. So all this data you can see from this dashboard. But in order to activate this dashboard, you have to copy and paste that code in your website. Every platform where you have to see the data, that platform should contain one such code, and that code you have to implement in your website in order to check the performance of that particular platform. So Facebook का अपना कोड होता है, Google का अपना कोड होता है, Google का एड्स का जो कोड, Google एड्स का एक तरह का कोड होता है, Google एनालिटिक्स का दूसरा तरह का कोड होता है. So all these codes you have to implement in your website to check the performance of your ads, to check the performance of your organic activities, to check the performance platform wise.
अभी ये कोड क्यों डालना पड़ता है? कोड डालने का रीजन ये है क्योंकि मेरा वेबसाइट का ओनरशिप मेरे पास है, और ये जो जितना भी प्लेटफॉर्म्स का नाम मैंने बताया ये मेरा थर्ड पार्टी वेबसाइट है, ठीक है। थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ मेरा वेबसाइट को जोड़ना पड़ेगा तो ही मेरा डेटा थर्ड पार्टी वेबसाइट में फ्लो करेगा। तो जोड़ने के लिए ये कुछ कोड्स रहता है, जो कोड ये एक वेबसाइट के साथ एक प्लेटफॉर्म को जोड़ता है, ठीक है। So if I implement that code in the website, then from that time onwards, I will get all the data of the users from my website to these platforms. ठीक है, एंड उनके बेसिस पे मैं कोई कुछ भी डिसीजन जो है वो मैं ले पाऊंगा। अभी इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने एकदम फास्ट क्लास में बोला था कि कोई भी वेबसाइट का एक अहम चीज जो होता है दैट इज लोडिंग स्पीड। लोडिंग स्पीड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट झट से लोड नहीं होगा तो मेरा एसीओ का जो इफेक्ट है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि लोग वेबसाइट में ही नहीं आए। एवरी 3 seconds increase in your website loading speed can decrease your traffic by 30%. So this is the data. Okay, so मेरा लोडिंग स्पीड को ठीक रखना है। So अगर मैं इतना सारा कोड मेरा वेबसाइट में डाल दूंगा, then it will create a mess. It will slow down my system or my website. So इसीलिए गूगल ने एक टूल लेके आया, that is गूगल टैग मैनेजर। इस गूगल टैग मैनेजर से हम लोग मल्टीपल कोड्स को एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, and we can get all the data in the respective platforms. हाँ प्रतीक्षा बोलो। सर कोड कहाँ है, मतलब जो कॉपी करना है अपने वेबसाइट पे यहाँ से? समझा नहीं, एक बार रिपीट करो। Sir, you told no that we have to copy the code from here to our website. So which code? I'm not able to. This is the code. Let's show you. Can you see it now? Yes, sir. So this is the analytics code. So every other platform has its own code. I'm only showing analytics code as of now, but all the platform have their own code. So you have to copy all these codes and you have to put it in the head section of your website. That is the way to do it. But if you put all these codes in your website will get heavy, and the loading speed will get decreased. Like it will take more time to load. Okay. So this is why we use Google Tag Manager, on which we can implement all the codes at once, and from there it will start tracking each and every activities in our website. Okay. Now, while doing website audit, you have to check whether your website have such tracking codes or not. Because if there is no tracking code, then it will be very difficult for you to initiate your activities. Because in that case, you don't have any data. You can't analyze your activities. Okay. So here we have learned a lot of activities. We have backlinks, we have linking, we have keyword stuffing, keyword density, cannibalization, canonicalization, a lot of things are there. So you are working in a lot of things, but if you can't measure that thing, it will be like worthless. Now, so to measure this, you have to implement it. So how to check whether your website, whether the new, like some clients came to you and asked you for SEO service. Now, when you are doing the audit, you have to check whether the code is there or not. Now, how to check whether the code is there or not? So there are two extensions.
One is Google Tag Assistant. Another is Facebook Pixel Helper. Okay. These are mainly Chrome extension. Google Chrome extension. Here you can see Google Tag Manager. Sorry. Google Tag Assistant. Yeah. So Google Tag Assistant, this is one tool, and Facebook Pixel Helper. This is one tool. If you have any code implemented in your site, it will show it here. So see, I came to this website and it is showing Facebook Pixel. It is also showing what are the tags available in the website. Google Optimize, Google Tag Manager, Google Site Tags, Google Ads Remarketing, Google Analytics. So all the data is here. So this particular extensions helps you to understand whether there is any tag in the website or not. If the tags are there, then it is fine. If there is no tag, then you have to implement this tag before initiating any task. Because otherwise, in the end of the month, you will not give, like, you don't have anything to give the report. So that is why you have to implement it fast and then you have to start your work. Understood? Yes, sir. Content readability. Content readability, there is no such tool to measure this thing. You have to check it manually. You have to check the content. Like, you can read 2-3 contents of any website, and then only you can understand whether the content they have published is readable or not. Readability means grammatically correct. The sense is very clear. Whatever they have written, the sense of that write-up should be clear. Okay. And the entire write-up should be point-wise and not an essay. If the more you write point-wise content, it will help the user to read properly. Because essay type contents, people don't want to read essay type contents. It's very boring kind of thing. So that is why you have to write point-wise content to improve the readability of your contents. Okay. H1 tag, sorry, H tags. H means header. Okay. So header tags. Every website has some kind of header tags. Like I am going here. Header tags, they have certain, like what I can say, like there are certain bifurcation of H tags. One is H1, then H2, H3, H4, H5, H6, like this. Like header 1, header 2, header 3, header 4. So this is how we use. So see, this is a blog. Let me check whether they have any H tags or not. See, H1. So the 8 best exercise for weight loss. This is the head H1 tag. Now let me check whether there is any H2 or not.
Okay, so no H tags currently found, but H1 tag is there. So every website should contain one H1 tag that contains the main keyword of the topic or the website. Okay. So H1 tag SEO के लिए बहुत important होता है. ये कैसे हम लोग करेंगे? मैं दिखाता हूँ. Basically, this is for WordPress website. So I'm creating a new page. Heading what? This. To define H2. H2. Okay. So this is how you have to write down H1 tag, H2 tag. Same for H3, H4, H5, H6. So these are basically the heading, and when you give some kind of heading, Google will prioritize that particular header to crawl. So if you put any kind of keyword in that header, it will be easier for you to get a rank on Google on that particular topic. So any doubt, Pratishtha, Mr. Jain? No, sir. Okay, rest probably I have already discussed. Now, one thing I want to say here, in our next class is on Tuesday. No, not Wednesday, it's on Wednesday. Okay. So whatever we have discussed related to SEO, I recommend you to go through it. Whatever links I have shared, check those links. Even try to implement these things on your own. In our next class, we will have a short question answer round as well as doubt clearing session. So I will it is a kind of oral exam. So I will ask certain questions, you have to answer me. And if you have any kind of doubt in terms of understanding or things, then I will discuss. So on Wednesday and Friday, we have 2 classes. We will try to cover these things. And then we will go for the next phase. The next phase is the international SEO. So let us finish this part, then we will go for international SEO. So is it okay for all? Yes, sir. Yes. जैन जी, आपका टाइम होगा क्या? मतलब आपका तो ऑफिस रहेगा. हाँ सर, ऑफिस है अभी तो कंटिन्यूअस. एक्चुअली क्या है, विधानसभा सेशन है हमारा. अच्छा. एमपी का. तो वो चूंकि उसमें क्वेश्चन आंसर्स जो एमएलएस के आते हैं तो उसकी रिप्लाई तैयार करने पड़ते हैं. तो अभी 19 तक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है. उसके बाद फिर फ्री हो जाएंगे.
ठीक है, दिक्कत नहीं, आप जितना हो सके कर लीजिए, नहीं तो बाद में और एक डाउट क्लियरिंग सेशन बाद में भी होगा। सो क्योंकि इतना तक हम लोग डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा देखना पड़ेगा क्या हुआ है, कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो हम लोग ये करते हैं, तो मैं सेशन यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। जी So, सर। मैं ग्रुप में भी एक बार ये अनाउंस कर देता हूँ। सो ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे वी विल डू दिस प्रैक्टिस। सर ओके, Okay, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.